Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 8 का यूनिट नंबर 2 and the title of unit is सादिया gets reward. हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक रोल प्ले। आपने अपनी क्लास में से दो बच्चों को लेना है, एक हिरा का रोल प्ले करेंगे और एक एमन का। तो रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hira, how are you? I'm fine. What about you? I'm good. How are you doing with study? Not so good. I'm not getting any encouragement from my family regarding my study. Maybe it is because I am a female. Why? Nowadays our government is very careful about female education. They are providing facilities for continuing education. The government also favors women empowerment. You are right. Can you tell me details about women empowerment? It is a process by which women gain power and control over their lives. They can exercise their power within and outside of home. But how it is possible in our country? Yes, it is possible by acquiring education. Only education can clear the road of a women empowerment. If you lag behind in education, it will only make you inferior. That's right, but how can I convince my family? Firstly, you should discuss it with your parents and request them to continue your study up to obtaining graduation degree. I'm really encouraged by your words. I shall try to discuss it with my family. Let me know if you need any help. Don't hesitate. Sure. Thank you for your valuable suggestion. You're welcome. Thanks. Bye. Now, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। यहाँ पर हमारे पास लुक अप द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड कंपेयर देम विद देयर मीनिंग इन द टेक्स्ट। नाउ सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग। ग्राउल, मेक अ लो साउंड, फ्लिंग, थ्रो और मूव फोर्सफुली, प्रीशियस, रेयर, विदाउट अ लॉट ऑफ मनी, पायरेक्स, वायलेंट, एग्रेसिव, trembling, shivering, clumsy, showing lack of skill, sink, go down below the surface of water. नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास है साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट। साइलेंट लेटर्स हमारे पास वो वाले लेटर्स होते हैं जो कि किसी वर्ड में लिखे तो जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं होते, यानी कि उनकी आवाज़ नहीं आती। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लाइम, हम इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे क्लाइम, बी साइलेंट है। टॉक, एल साइलेंट है। कम, ई साइलेंट है। फासन, यहाँ पे टी साइलेंट है। ऑनेस्ट, एच साइलेंट है। हाफ, एल साइलेंट। नॉब, इसको हम कनॉब नहीं पढ़ेंगे, नॉब। नॉलेज, थम, बी साइलेंट है। निटिंग, कैसल, पाम, काम, रिसिप्ट, डम। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। How did the older servants treat Sadia? The older servants treated Sadia unkindly. What did the cook order her to do? The cook ordered her to wash cups and saucers. Why did the cook call Sadia clumsy fool? The cook called Sadia a clumsy fool because Sadia broke the cup. How did the door glass break? The door glass broke by hitting the broom with the glass door. Why did she look out of the window? She looked out of the window to calm herself. What did young Tahir do when he saw the bear? Young Tahir went out to play with the bear. Why did Sadia hurry to the window? Sadia hurried to the window to throw ornaments to bear so that she can save the life of young Tahir. Why did she gather the ornaments in her arms? She gathered ornaments in her arms so that she can throw on bear to save the life of young Tahir. Why was Mr. Saad pleased with Sadia? Mr. Saad was pleased with Sadia because she saved the life of his son. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नई वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।